Children, can you hear me now? If you can hear me, type LNC. All right, kids. So let's move on. Last class we were talking about the various. We were talking about muscles involved in respiration. So just a quick recap of that mechanism. Rather, we'll start with a new part of it. Mechanism of respiration. In that, the first part we are doing is breathing. For breathing, we need to understand diaphragm, right? So you've understood diaphragm. What is diaphragm? Diaphragm is a muscular separation between the thorax and abdomen. Yes. Next, the muscle is called phrenic muscle. Contracted diaphragm is flat and relaxed diaphragm is dome shaped. So when the diaphragm is flat, it is contracted. When it is relaxed, it is dome shaped. And diaphragm is also found in mammals. Okay. Now there are muscles between the ribs. Our last class I taught you ribs. Ribs were also called costa. There are muscles between the ribs. Those muscles are called intercostal muscles. Intercostal muscles. So when I dissect the human body, I am going to see intercostal muscles between the ribs. They are called external intercostal muscles. फिर जब मैं ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कट करूंगा तो उसके पीछे मुझे दिखाएगा देगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. सो रिब्स पे आगे की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं और पीछे की तरफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं. इंटर मींस इन बिटवीन, कॉस्टा मींस रिब. Internal intercostal muscles. So intercostal muscles are muscles between the ribs of the thoracic cage. Yes, हमने ribs किया था. 1 to 7 pairs of ribs are attached directly with their cartilage. 8th, 9th and 10th are attached to the costal cartilage of the 7th rib. Now there are two types of intercostal muscles: external intercostal muscles and internal intercostal muscles. So external intercostal is sometimes written as EICM. EICM, external intercostal muscles. It begins from the upper rib and ends in front of the lower rib. It begins from the upper rib and ends in front of the lower rib. ठीक है, मतलब अपर रिब के पीछे से शुरू होगा और लोअर रिब के आगे खत्म होगा. ठीक है. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स उल्टा होता है. इट विल बिगिन फ्रॉम बिहाइंड द लोअर रिब एंड विल एंड इन फ्रंट ऑफ द अपर रिब. मतलब ये नीचे से ऊपर चालू होता है. या इफ यू कैन सी क्या है, it begins from the upper lip and ends to the lower rib. Internal intercostal begins from the lower lip and ends in front of the upper rib. Both of them begin from behind and they end in front. ठीक है. So this is how the intercostal muscles will be present. Okay. Can you tell me yellow and red, which one of them is internal intercostal muscle? Yellow and red, which one of them is internal intercostal muscle? जो डायरेक्शन है येलो और रेड में से कौन सा इंटरनल इंटरकॉस्टल? सलोनी, निरंजन, Aditya, this is just the beginning only. This is the beginning of the lecture only. Okay. So we were doing muscles of breathing in which we did diaphragm last class. Today we have done intercostal muscles. Intercostal muscles are muscles. Intercostal muscles are muscles between the in between the two ribs. Intercostal muscles are muscles between the two ribs. There are two types of intercostal muscles. One is external and one is internal.
The one which can be seen from the outer surface is external intercostal muscle. One which can be seen from behind is called internal intercostal muscle. External intercostal muscle begins from up. Yes, external intercostal muscle goes from up to down. Internal intercostal muscle goes from down to up. It goes from down to up. They all go from behind in front. So it goes from behind the upper rib. So behind the upper rib मुझे red दिख रहा है, right? And in front of the lower rib red दिख रहा है. So this is external intercostal muscle. है ना? Behind the upper rib and in front of the lower rib. The one which I have drawn in yellow, it is behind the lower rib and in front of the upper rib. So this is internal intercostal muscle. Now I have just drawn this one, but actually it is not like this is one line this I have drawn. This entire thing is filled like this. Okay. So imagine this entire thing will be filled like this, going from behind, coming in forward. See how the muscles are present completely between the two layers like this. Correct? This is just the direction that I wanted you to see. तो एक्सटर्नल वाला बाहर की तरफ है, उसका ये वाला रेड देखो, रेड बाहर की तरफ दिख रहा है और येलो अंदर पीछे की तरफ है. All right. So what are the two types of intercostal muscles? External intercostal muscle and internal intercostal muscles. External intercostal muscles are externally, they are upper muscles. Internal intercostal muscles are muscles which are behind. External intercostal muscles begin from the begins from behind the upper rib and ends in front of the lower rib. Internal intercostal muscles begins from behind the lower rib and ends in front of the upper rib. Yes. So this is the direction of the two muscles. All right. Now this is extremely important. So if this is the midline of the body, okay, and these are the two ribs, then the direction of external intercostal muscles is going to be like this. The direction of external intercostal muscle का direction ऐसा है. ठीक है? If this is the midline and these are the two ribs, the direction of the fibers of internal intercostal muscles are like this. So ये दो directions important है. Right? Please draw this and this in your books. External intercostal muscle and internal intercostal muscles. All right. Then we move ahead and we come to the mechanism of respiration. We are on breathing, and breathing involves two parts: inspiration and expiration. Inspiration and expiration. Inspiration is also known as inhalation. Inspiration is also called inhalation. How it is inhaled. Expiration is also called exhalation. Now, when we talk about inspiration, what happens in inspiration is an active process. Can you tell me what is the meaning of the word active process? What is it when I say active process? What does it mean? Come on, in the comment box, tell me what is the meaning of active process. Very good, Khushi. Active process means what? Active process, Shravani, correct. Whenever you have the word active, Niranjan, correct. It means it requires energy. The duration of inspiration is 2 seconds. Okay.
Now, whenever inhalation is there or inspiration is there, what needs to be done is that the air needs to come in. The air needs to come in. Now, for the air to come in, the diaphragm, so basically what happens? ठीक है, हम सब ने पढ़ा है PV is constant, NRT correct. तो अगर मुझे हवा अंदर लेके आनी है, ओके, A is atmosphere, L is lung. अगर एयर को एटमॉस्फेयर से लंग में आना है, सो व्हाट शुड बी द प्रेशर डिफरेंस? हु शुड हैव हायर प्रेशर? ओके, यू जस्ट हैव टू फिल द साइन. ए और एल के बीच में प्रेशर किसका ज्यादा रहेगा? एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि लंग का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? इफ इनहेलेशन में एयर हैज टू एंटर द लंग्स ना, तो अगर एयर एंटर कर रहा है लंग्स में, तो एयर लंग्स में एंटर करने के लिए क्या होना चाहिए? लंग्स का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि एयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? लॉजिकल है, एयर का प्रेशर. ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट. एटमॉस्फेरिक एयर और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन द प्रेशर इन द लंग्स. और आई कैन से द pressure of air in the lungs should be less, but we know PV मतलब pressure, and if this is constant, I know P is inversely proportional to V. If P is inversely proportional to V, what does that mean? अगर मुझे प्रेशर कम करना है तो मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. सो अगर लंग का प्रेशर डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? लंग का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. एंड लंग का वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब डायफ्रम डोम शेप नहीं फ्लैट हो एंड थोरैसिक कैविटी बड़ा हो जाए. तो जब थोरैसिक कैविटी बड़ा हो जाएगा, डायफ्रम फ्लैट हो जाएगा, तो द थोरैसिक कैविटी के अंदर जो स्पेस है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा. मतलब लंग्स एक्सपांड कर जाएंगे. लंग्स एक्सपांड कर जाएंगे मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब प्रेशर कम हो जाएगा. और अगर प्रेशर कम हो गया तो एयर विल एंटर. सो वी डिड दिस. Dome shape is when the diaphragm is relaxed. Flattened is when the diaphragm is contracted. So to increase the volume of the lung, the diaphragm should contract. So inspiration will involve contraction of diaphragm. Diaphragm becomes flat. The lower surface of lung will be pulled down. The contraction of external intercostal muscles will also take place. तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो मेनली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से वॉल्यूम बढ़ने वाला है, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स से भी बढ़ने वाला है. नाउ व्हेन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंस इज द So can you look at the direction of these arrows? What is happening here? These arrows, yes. So when the external intercostal muscles contract, the ribs will be pulled outward, bahar ki taraf, and upwards. So if the ribs are pulled outward, suppose ye aisa tha, ribs are pulled outward, the volume will increase. Okay, so when the contraction of diaphragm and contraction of external intercostal muscles take place, because of this the volume of thoracic cavity increases. Diaphragm becomes flat, lower surface of the lung is pulled down, the ribs are pulled outward and upward. Because of this, volume of the thoracic cavity increases. Because of the volume of the thoracic cavity increasing, pressure in the lung decreases.
अब वो कैसे होता है? रिमेंबर thoracic cavity is an airtight chamber. तो अगर ये thoracic cavity है और ये lungs है, right? Then you remember lungs have two types of pleura, right? Two membranes, one is visceral pleura and the other one is parietal pleura. The visceral pleura is attached to the lungs, the parietal pleura is attached to the thoracic cavity. So अगर thoracic cavity stretch होगा तो parietal pleura भी stretch होगा, तो lungs भी stretch होंगे. So the volume of thoracic cavity increases, that gives more space for the lungs to expand. So volume of the lung will also increase and pressure inside the lung will decrease. So you realize that inspiration या breathing के लिए मुझे दो contractions चाहिए. एक contraction of diaphragm and contraction of external intercostal muscles. Both these muscles are what type of muscles? These are skeletal muscles or smooth muscles? What type of muscles are they? Diaphragm and external intercostal muscles. What type of muscles are they? Skeletal muscles or smooth muscles? Good, Khushi. Niranjan incorrect. Devangi correct. Aditya correct. Last time diaphragm when we did, I made it very clear. Diaphragm is made up of skeletal muscles which are involuntary. They are made up of skeletal muscles, right? And contraction of skeletal muscles is an energy using process or energy releasing process? Energy using or energy releasing? Energy using process or energy releasing process? Correct. So that is why it is an active process, because it needs energy. All right. Now when the volume of thoracic cavity increases, pressure in the lung decreases. So air will gush in from the atmosphere. This type is called the negative pressure type lungs because the lung ka pressure is decreased. All right. Lungs pressure is decreased. Now in expiration, the process will be ulta. So if I want the ribs to go inward and upward, what should happen to external intercostal muscles? Come on. If I want to take the direction of outward and upward के बजाय inward and downward करना है. So what should happen to external intercostal muscles? They should contract or relax? Same logic say expiration will be an exactly opposite process, correct? Matlab expiration will be a passive process. We don't need energy. The duration of relaxation is going to be more than duration of contraction. So expiration actually is longer than inspiration. Expiration needs 3 seconds. Now what happens here in expiration? Can you see the arrows? The ribs will be pushed downwards. And here the diaphragm ka dome is being pushing upwards. Okay, so there is relaxation of diaphragm. Diaphragm goes back to being dome shaped. The lower surface of the lung is pushed up now. There is relaxation of external intercostal muscles. Ribs are pushed inwards and outwards. Because of this, volume of the thoracic cavity decreases. Because the thoracic cavity and lungs are interconnected by pleura. When the volume of thoracic cavity decreases, volume of the lung will decrease, the pressure in the lung will increase, thus air in the lung is pushed out. Okay. Now this type of expiration and inspiration, are you breathing continuously? Do you breathe 24/7 continuously?
Yes, do we do that? Now, do we take effort in breathing? In fact, when we are talking, when we are moving, we don't even realize that we are breathing. So, such type of breathing is called effortless breathing. So, there is effortless inspiration or effortless expiration. We can also have, effortless is also called normal inspiration and normal expiration. So just a quick recap. Breathing involves two processes, inspiration and expiration. Inspiration is the process by which air enters the lungs. Expiration is the process by which air comes out of the lungs. Inspiration is an active process with a duration of 2 seconds. Contraction of diaphragm makes the diaphragm flat. Lower surface of the lung is pulled down. Contraction of external intercostal muscles will push the ribs outward and upwards. Contraction of diaphragm is responsible for 80% of the process or 80% of increasing the volume, and contraction of external intercostal muscle is only responsible for 20%. Now, because of all this, the volume of the thoracic cavity will increase. Hence, pressure inside the lung will decrease. When pressure inside the lung decreases, the air will be gushed in from the atmosphere. This type of breathing is called the negative pressure lung. Similarly, in a normal or effortless expiration, it is a passive process. Because of this, because the duration of this is 3 seconds, it occurs because of relaxation. Relaxation of diaphragm makes the diaphragm dome shaped, so lower surface of lung is pushed up. Relaxation of external intercostal muscles will cause the ribs to move inward and outward. As a result, the volume of thoracic cavity will decrease and pressure increases. ठीक है? Now, important to be noticed is there is forced expiration also. So there is forced expiration and there is forced inspiration. Forced expiration is an active process. We'll come to forced expiration in a while from now. We've also done the concept of negative pressure breathing. Normally it occurs in mammals. Because of negative pressure breathing, we can eat and breathe at the same time. Okay? But air, animal kingdom I have taught you, where air is collected in the buccopharynx, okay, and it is pushed into the lungs, right? All right. So this is expiration and inspiration. We'll come to it in a while from now. So apart from this, we also have forced inspiration and forced expiration. Forced inspiration and forced expiration. Forced expiration. Now, forced inspiration and forced expiration, both of them are active processes. That means both them involve contraction of muscles. Now, in both of them, there is in forced inspiration. So, if you remember, there are two muscles which are involved in normal breathing. Yes. What are the two muscles? Diaphragm and external intercostal muscles. Now, when we don't need an additional force, external intercostal muscles, when we don't need a lot of force, our body, has a normal rhythm. Little air is being entering. Now, when we need a lot of air to enter,
more muscle fibers, so there will be greater power produced by, there will be greater power produced by greater contraction. Greater matlab more muscle fibers are contracting. Greater number of muscle fibers are contracting. So force expiration भी diaphragm और external intercostal muscle से ही होता है. More number of muscle fibers contract of the same. ठीक है. तो पहले अगर सपोज 10% होता होगा तो फिर तो पहले नॉर्मली सपोज 30-40% होता है तो यहाँ पे 70-80% कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ना फोर्स इंस्पिरेशन कैन नॉट बी पैसिव. नाउ एक क्वेश्चन खुशी ने पूछा कि सर सर मसल रिलैक्सेशन में भी एटीपी चाहिए होता है, तो देन व्हाई इज एक्सपिरेशन कॉल्ड अ पैसिव प्रोसेस? बच्चे ये पैसिव है ना, इज विथ रिस्पेक्ट टू योर बॉडी स्पेंड्स एनर्जी इन contracting and increasing the volume. But once the volume is increased and the lungs are filled with air, there will be no choice but to have a elastic recoil. मतलब अगर आप इंस्पिरेशन करके रोक लो, डीप ब्रेथ लो और रोक लो, your muscles have to spring back, they have to come back. So normal expiration is, that is why it is called a passive process, because it's almost like an elastic recoil. ठीक है. Now forced expiration on the other hand is an active process. Now you remember that we were having external intercostal muscles and we were having muscles जिसका डायरेक्शन उल्टा था, राइट? तो what was contraction of external intercostal muscle causing? उसका opposite will be caused when there is contraction of internal intercostal muscles. So when there is a contraction of internal intercostal muscles, what does it mean? You remember अभी 2 मिनट पहले forced diaphragm, external intercostal muscles के वजह से ribs were moving what? Ribs were being pushed upwards and outwards. So because of contraction of internal intercostal muscles, ribs will be pushed what? Downwards and inwards. The ribs will be pushed what? Inwards and downwards. Inwards and downwards. ठीक है. Now if you remember, relaxation of external intercostal muscles was pushing the ribs inwards and downwards, right or no? That means whatever is caused by relaxation of external intercostal muscle caused by contraction of internal intercostal muscles. So this basically helps in forced expiration. Now internal intercostal muscles will also be helped. So in this process there are muscles which will help. So what are those muscles? The muscles which are going to help forced inspiration as well as forced expiration, they are called accessory muscles. So the accessory muscles which will actually help in forced expiration are abdominal muscles. So abdominal muscles को अगर आप contract करोगे, so it will put more force and there will be forced expiration. Now accessory muscles in forced inspiration are primarily muscles of the neck to hold the trachea in position. अगर बहुत force से air अंदर आएगा तो trachea का एक direction में या push होने का chances है. So the accessory muscles during
they are only required during forced inspiration. What is the function of accessory muscles? They fix the trachea in position. They fix the trachea in position. Okay, so they are not the main muscles of inspiration. Inspiration से जो after effect आता है, उसके लिए there is accessory muscles. So there are three muscles here. The first one looks like, you know, triangle. So they are called scalene muscles. And scalene muscles in our body are three pairs. So there are three pairs of scalene muscles. Then there is one pair of serratus anterior. Serratus anterior. Serratus का मतलब होता है, you know, tooth margin. Serratus का मतलब होता है जिसकी मार्जिन ऐसे हो. Okay? Margin ऐसी हो, serratus. And the third one is called sternocleidomastoid muscle. Sternocleidomastoid muscle. स्टर्नो का मतलब है स्टर्नम पे अटैच्ड है. क्लीडो का मतलब है क्लैविकल या कॉलर बोन पे अटैच्ड है. सो एक मसल है जो स्टर्नम पे भी अटैच्ड है, कॉलर बोन पे भी अटैच्ड है. एंड मैस्टॉइड इज a projection of the skull behind the ear. It is a projection of skull behind the ear. तो ये तीन जगह पे अटैच्ड होता है. इसके लिए इसको बोलते हैं sternocleidomastoid behind our ear. So respiration, forced inspiration and forced expiration, both of them are active. Forced inspiration is caused by the same ones which cause normal inspiration. ठीक है? But forced expiration में there is a, greater pressure difference, greater, ये created flow, so we need accessory muscles. Come on, kids, just finish this up so that I can move on to the next slide. Once you finish, just write done so that we know it's done, so we can move forward. So we did normal respiration, then we are doing forced respiration. Last 1 minute. Done, everyone? All right. Moving on. Okay. So now, just to give you a recap of the entire thing. So we had
we had two types of inspirations. ठीक है? Two types of inspirations. Okay? So we had inspiration or inhalation. One of them was normal. Normal matlab effortless. And the second one is forced inspiration. Normal is what? Effortless, and forced is with effort. Correct? Now both inspirations, normal and forced, are active. ठीक है? Both of them require what? Contraction of diaphragm, and contraction of external intercostal muscles. Even forced inspiration requires contraction of diaphragm and contraction of external intercostal muscles. The only thing is that it will also need accessory muscles. Why will it need accessory muscles? Because there is more force. So here there is a greater contraction. In this there is a greater contraction. Then on the same grid I can also write about expiration. है ना? Expiration. So there is normal expiration and then there is forced expiration. Normal expiration also again involves relaxation of diaphragm. Normal expiration also involves relaxation of diaphragm and relaxation of external intercostal muscles. So it involves relaxation or the muscles will come back to normal. Hence, normal expiration is a passive process. Yes, but forced, जिधर भी word forced आ गया वो तो हमेशा active ही रहेगा, right? So forced expiration is active process, and this is the only place where internal intercostal muscles are required. So forced expiration involves contraction of internal intercostal muscles and it will need abdominal muscles. So normally we do these two, expiration, inspiration happens normally with the help of diaphragm and external intercostal muscles. This grid is very, very important. Quickly finish this. Not a very complicated grid. When you're done, just type OK or so that we can move forward.
Normal breathing or effortless breathing sometimes is also called quiet breathing. Muscles of the diaphragm are also known as phrenic muscles. Phrenic muscles are muscles of the diaphragm. Done? Okay. Then the volume of the thorax is increasing in two ways. Volume of the thorax is increasing in two ways. During during inspiration, volume of the thorax increases in two ways. Okay. The first way is when the antero-posterior diameter, anterior या antero-posterior diameter, antero-posterior diameter is increased. And the second one is when dorsoventral, dorsal and ventral, dorsoventral diameter increases. So एंटेरो पोस्टीरियर या एंटीरियो पोस्टीरियर एनसीईआरटी में एंटेरो पोस्टीरियर दिया है एंटेरो पोस्टीरियर diameter of the thoracic cage is increased because of contraction of diaphragm. Very very important. इसके ऊपर नीट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. Whereas dorsoventral diameter of the thoracic cage is increased by contraction of external intercostal muscles. Very very important. So during breathing, the volume of the thorax increases in the antero-posterior diameter and in the dorso-ventral diameter. Antero-posterior diameter is increased because of contraction of diaphragm. Yes. And dorso-ventral diameter is increased because of contraction of external intercostal muscles. Antero-posterior matlab anterior to posterior. Dorsoventral means from dorsal side to ventral side. All right, completed. So we will quickly move on. Now with this, this is called breathing. Inspiration and expiration is breathing. And in breathing, we have different types of breath rates. So what is a breath rate? The number of breaths we take in a minute. So one inspiration and one expiration together is one breath. So number of breaths that I take in a minute is called breath rate. The normal breath rate in humans is 12 to 16 per minute. एक मिनट में हम 12 to 16 times breathe करते हैं. But in children, the breath rate is more than the adults. Infant. What is an infant? Earlier classes में मैंने आपको सिखाया. What is an infant? Infant, newborn baby.
ये भी पहले ही आंसर दिया था, खुशी और एब्सोल्युटली करेक्ट. Yes, Niranjan, absolutely correct. A baby less than 1 year of age. A human less than 1 year of age. ना हमने ये समझना जरूरी है कि जिसका लंग्स उसके बॉडी के प्रोपोर्शनेटली छोटा होगा, उसका उसको ज्यादा ब्रीथ करना पड़ेगा. Like an animal having smaller lungs will have to, an animal having smaller heart will have to beat faster. Similarly, an animal having smaller lungs will have to breathe more. So infant breath rate is around 40 per minute. So I can con- conclude that in infants breath rate will be more. Normal breath rate is also called eupnea. Pnoe. Eupnea. U means true, pnea means breathing. That's called normal breathing. Matlab 12 to 16. Then if there is low breath rate, less than 12 per minute, then it is called bradypnea. Bradypnea. ओके, ब्रैडिपनिया. ब्रैडी का मतलब होता है लेस, एंड निया मीन्स ब्रीदिंग. ब्रैडिपनिया लेस ब्रीदिंग. और हाइपोपनिया. हाइपोपनिया, हियर अ पी इज मिसिंग, इट इज हाइपोनिया नहीं, हाइपोपनिया. हाइपोपनिया, पी एन ओ ई, हाइपोपनिया. Fast breath rate is called tachypnea. And if a person has difficulty in breathing, it will be called dyspnea. डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी. तो अगर यही हार्ट रेट से करे तो नॉर्मल हार्ट रेट इज यू कार्डिया, लो हार्ट रेट इज ब्रैडी कार्डिया, फास्ट हार्ट रेट इज टैकी कार्डिया. समझा? अब हार्ट रेट में ऐसा डिफिकल्टी इन हार्ट रेट नहीं होता है, राइट, बट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है. तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड डिस्निया. डिस्निया. पी इज साइलेंट. Complete stoppage of breathing is called apnea. Apnea. Okay? Complete stoppage of breathing is called apnea. Now, when I observe the breathing externally, there are two types of breathing that I can see externally. One is called thoracic breathing. तो जब मैं किसी को सोते हुए देखता हूं और उसको ब्रीथ करते हुए देखता हूं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग दैट आई कैन सी, thoracic breathing and abdominal breathing. Okay, now in thoracic breathing, so we can observe lateral movements of the thorax, lateral movements of the thorax and abdominal movements. So जब मैं किसी को ब्रीथ करते देखता हूं तो मुझे दो मूवमेंट्स दिखाई देती है, लैटरल मूवमेंट्स ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमिनल मूवमेंट्स. अगर किसी के ब्रीदिंग में मुझे ज्यादा थोरैसिक मूवमेंट और कम एब्डोमिनल मूवमेंट दिखेगा तो उसको मैं बोलूंगा दिस पर्सन हैज थोरैसिक ब्रीदिंग. और किसी में एब्डोमिनल मूवमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है एंड थोरैसिक का कम है, तो देन वी विल कॉल दिस एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग. ओके Devangi, when do you think apnea happens? You are asking me that question. Apnea कब होगा? When do you think apnea happens? Yes.
ठीक है. Now, abdominal breathing is commonly found in human males, and in women it is thoracic breathing. And pregnancy में the thoracic breathing is more pronounced. तो प्रेगनेंसी में द thoracic breathing is more pronounced. Why? Because abdomen में बेबी ग्रो हो रहा है, राइट? So women, and especially during pregnancy, if you see, the movement of abdomen is very limited. Please make a note of this: thoracic breathing versus abdominal breathing. In majority of the people, we see abdominal breathing. That is why we've written eupnea, also called abdominal breathing. Abdominal breathing is one in which we observe when a person is lying down, there are abdominal movements. Okay, more abdominal movements. Once you finish that, we can move on to the next. All right. Now we measure the various volumes in the lungs. Okay, that is related to breathing, respiratory volumes and respiratory capacities. Now, volumes are basically during the entire process of breathing, how is the volume or what is the volume in the lung? It is measured by an instrument called the spirometer. So spirometer is this long tube like structure, correct? इसके अंदर ये जो मार्किंग्स है, ये जो ये है क्या बोलते हैं, ऑरेंजिश एक बॉल जैसा है. From here, when you push air, this will keep on moving, and this is very very lightweight, extremely lightweight. तो थोड़ा भी movement in air can be detected here. So this is spirometer. Now the first volume is called the tidal volume, which we have during quiet breathing. Okay. Now what is this tidal volume during quiet breathing? Now when you are breathing normally, the there is almost increase decrease ऐसे होता है वो. स्पायरोमीटर में जो वॉल्यूम के चेंजेस है, अगर वो मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो ऐसे होगा वो. सो इट लुक्स लाइक व्हाट, अ वेव, एंड दिस वेव इज कॉल्ड अ टाइड. सो टाइडल ब्रीदिंग, एंड दिस इज 500 ml. मतलब when you breathe in 500 ml, breathe out 500 ml, breathe in 500 ml, breathe out 500 ml. ऊपर जा रहा है ब्रीद इन, नीचे जा रहा है ब्रीद आउट, ऊपर जा रहा है ब्रीद इन, नीचे जा रहा है ब्रीद आउट. समझा?
So this volume is called the tidal volume. Tidal volume happens when there is normal inspiration and normal expiration. Tidal volume measured by spirometer is 500 ml, half a liter. Okay. Now I want all of y'all to breathe normally. Okay. Put your pens down. Let's do this activity. All of you. Are you breathing normally? Guys, can you hear me? Okay, so we did tidal volume. When you are breathing normally, it's measured by a spirometer. Tidal volume is quiet breathing. It is about 500 ml. Now, if you took little effort also, मतलब आपने थोड़ा भी breathe करने का कोशिश किया, it is not tidal volume. You know why? Because tidal volume is quiet breathing. Quiet breathing का क्या मतलब है? आपको थोड़ा भी पता नहीं चलना चाहिए, तो आप जस्ट अपना मुंह बंद करके ब्रीथ करने की कोशिश मत करो. जब आप ब्रीथ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो जो वॉल्यूम आपका लंग्स एक्सचेंज कर रहा है वो है टाइडल वॉल्यूम. समझा? तो ये इंस्पिरेशन होगा, फिर एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन. नाउ try to breathe in. Okay, I'm counting, breathe in and don't breathe out, right? When I start counting, you just keep on breathing in, don't breathe out. Okay, 1 2 3 start. 1 2 breathe in, 3 breathe in, 4 breathe in, 5 breathe in, 6 breathe in. Right, so there was a time when you breathed in, okay, and then you could not hold it, right? So what happened here? Now the graph would have gone, how would the graph have gone? ऐसे ऊपर तक गया, and now you are breathing normally. Correct? Now kids, try to breathe out. Try, when I count, then you try to breathe out. Okay? And let's start. Breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Now when you are breathing out and you breathe in, right? You breathe in and you breathe out. Tell me, kids, when you were breathing in and you were breathing out, in which one were you having more? मतलब, which one could you do more? Forced inspiration या forced expiration? FI और FX? FI और FE? चलो, क्या ज्यादा कर पा रहे थे? फोर्स्ड इनहेलेशन कर पा रहे थे ज्यादा कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर पा रहे थे? दोबारा से, अच्छा दोबारा से करते. चलो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू जस्ट ब्रीद नॉर्मली. ब्रीद नॉर्मली मतलब डोंट डू एनीथिंग. नाउ when I say start, you will start breathing in as much as possible. Breathe in. Come on, breathe in.
breathe in, breathe in, breathe in, don't breathe out, breathe in, keep on breathing in, breathe in, breathe in, and there's a time when you can't hold it, right? It will automatically, you'll breathe out. So you were breathing in, right? So you took certain volume of air inside. Now again breathe normally. Breathe normally matlab you don't have to do anything. Just be quiet. Don't try to do anything. Now when I give you the count, when I say start, start breathing out. Okay? Breathe out, breathe out as much as you can breathe out. As much as you can breathe out. So there is a time when you can't breathe out more. Correct? Now you tell me that when you were breathing in, some amount of air would have gone in. When you were breathing out, some amount of air would have gone out. Correct? Forcefully when we were doing this activity. Can you tell me क्या ज्यादा था? इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन? आई और ई लिख दो चलो. इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, किसका वॉल्यूम ज्यादा था? अगर आपने सही से किया होगा, nobody can have expiration value more. You can breathe in more, but you can't breathe out more than what you have breathed in. या सो अगर ये ऊपर जा रहा है, इंस्पिरेशन है, ये एक्सपिरेशन है, तो नॉर्मल से ये नीचे जा रहा है ऐसे. सो व्हेन आई एम एट दिस पॉइंट, this is normal inspiration. When I am at this point, this is normal expiration. This is normal expiration. When I reach this point is forced inspiration. When I reach this point, it is forced expiration. Did we understand this? So I can say that ये जो लाइन है, ये जो दो लाइन है, ये ग्राफ वापस से अच्छे से प्रेजेंटेशन में है आगे. जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस. सो दिस इज वेयर माय नॉर्मल ब्रीदिंग इज टेकिंग प्लेस. सो इसको टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे हम. बट कैन आई से फ्रॉम हियर टिल हियर व्हेन आई वाज मैक्सिमली इनहेलिंग, इतना मेरे लंग में वॉल्यूम मैं रख सकता हूं, इतना वॉल्यूम मैं लंग में रख सकता हूं, पर नॉर्मली यूज नहीं करता हूं. तो कैन आई से ये मेरे लिए रिजर्व वॉल्यूम है. सिमिलरली यहां से लेके यहां तक मेरे लंग में वॉल्यूम है जो बी रिजर्व है, जो मैं नॉर्मली यूज नहीं करता हूं. सो फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम टिल फोर्स्ड एक्सपिरेशन, फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम टिल फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इट्स कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो मैं इंस्पिरेशन में यूज करूंगा. एंड दिस वन इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये जो वॉल्यूम है वो मैं एक्सपिरेशन में यूज करूंगा. ठीक है? सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम इनहेलेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम. ये अपना टाइडल वॉल्यूम है. करेक्ट? सो मैक्सिमम इनहेलेशन जितना भी मैं कर सकता हूं, मैक्सिमम इनहेलेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम will be called inspiratory reserve volume, and that is 3000 ml. That means 3 liters. Then we have expiratory reserve volume, maximum exhalation over, yeah, you can say tidal volume over tidal volume. So maximum exhalation over tidal volume is expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is almost 1/3 of inspiratory reserve volume. तो जब आप ब्रीद इन करेंगे, यू कैन ब्रीद इन मोर. अब जब आप ब्रीद आउट करोगे, थोड़ा सा ही ब्रीद आउट होता है, राइट? बहुत ज्यादा ब्रीद आउट नहीं कर पाते हो, बिकॉज वो रिजर्व वॉल्यूम उतना है ही नहीं. So can you tell me what will be the total volume of lung?
Come on, in the chat box, tell me what will be the total volume of lung. What is the total volume of lung? Okay, so some people have added tidal volume, inspiratory volume, and expiratory volume. That's good. Okay, that's absolutely good. But you know what? आफ्टर वी फुली एक्सपायर, मतलब फोर्सफुली एक्सपायर होने के बाद भी लंग में कुछ वॉल्यूम एयर रहता ही रहता है. लंग कभी भी लंग कभी भी पूरा एयर का वॉल्यूम नहीं निकालता. तो सपोज ये 0 है, ये जो एरिया है, इतना वॉल्यूम लंग में हमेशा रहता है. ठीक है, फिर ये टाइडल वॉल्यूम होगा. ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर से टाइडल, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर से टाइडल. समझ रहे हो? लंग में यहां से लेके यहां तक इतना वॉल्यूम है जो हमेशा लंग में रहता है. दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम. वो कभी भी बाहर नहीं निकलता है. एंड दिस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट because it prevents collapse of the lungs. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक इमेजिन करवाया था. इमेजिन अ बलून विच इज अटैच टू अ ट्यूब लाइक दिस. एक ट्यूब है, उससे बलून अटैच हो गया है. अब जब मैं ये ट्यूब में हवा भरता हूं तो बलून एक्सपांड करता है. जब इसको छोड़ देता हूं तो बलून कॉन्ट्रैक्ट करके, है ना, पूरा हवा निकल जाता है. तो कहना से बलून इज कंप्लीटली कोलैप्स्ड. अब जब मैं दूसरी बार हवा भरता हूं तो बलून उसको रेजिस्ट करता है, राइट. इसीलिए जब हम लोग नॉर्मली बलून फुलाते तो कैसे हम लोग बलून को स्ट्रेच करके फुलाते हैं ना. सो अगर लंग्स पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम इंस्पिरेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा. एंड दैट इज व्हाई lungs have an additional volume in them called residual volume. Residual volume is the volume which is always left in the lungs, and this is called residual volume, which is more than expiratory reserve volume. It's around 1200. Now tell me, out of these volumes, which volume cannot be measured by a spirometer? नीट का क्वेश्चन है. Which of these volumes cannot be measured by a spirometer? बताओ. Which of these volumes cannot be measured by a spirometer? Residual. स्पायरोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? मुंह में एक ट्यूब रखते हैं और वो ट्यूब एयर को ये करता है, राइट. सो रेजिडुअल वॉल्यूम तो लंग से बाहर निकलेगा ही नहीं. सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. Residual volume is not measured by a spirometer. It is measured by a separate method called nitrogen washout method. नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड का मतलब ये होता है कि कितना नाइट्रोजन गया और कितना नाइट्रोजन वापस आया. तो कुछ नाइट्रोजन अंदर ही रह जाता है. डिटेल्स आपको नहीं है, आपको सिर्फ मेथड याद रखना है, नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड. So respiratory volumes and capacities are measured by spirometer. Out of that, tidal volume, reserve volume, expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume, and residual volume are 4 volumes. Out of this, residual volume cannot be measured. Residual volume can't be measured by a spirometer. Can't be measured by a spirometer. In fact, it is measured by the nitrogen washout method. Now, what is the capacity? ये तो वॉल्यूम है. कैपेसिटी का मतलब होता है पोटेंशियल, कितना हम यूज कर सकते हैं.
Okay. For example, can you tell me what is the potential or capacity for inspiration? So if I tell you what is the inspiratory capacity, ठीक है? So tidal volume TV, inspiratory reserve volume IRV, expiratory reserve volume ERV, रेजिडियल वॉल्यूम आरवी, इन चारों वॉल्यूम में से इंस्पिरेशन में कौन कौन मदद करता है? इन चारों वॉल्यूम्स में से इंस्पिरेशन में कौन मदद करता है? आई डोंट नीड द वैल्यू ऑफ, मतलब मुझे नंबर नहीं चाहिए, कितना एमएल उतना नंबर नहीं चाहिए मुझे, ये इन दोनों में से कौन सा इंस्पिरेशन, इन सॉरी चारों में से कौन सा इंस्पिरेशन में मदद करेगा? वेरी गुड खुशी, वेरी गुड देवांगी, आदित्य थिंक अगेन। इंस्पिरेशन में बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन में आईआरवी लिख रहे हैं, बच्चे टाइडल वॉल्यूम में भी तो इंस्पिरेशन होता है ना, टाइडल वॉल्यूम में इंस्पिरेशन होता है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी इंस्पिरेशन मिलेगा, राइट? सो इंस्पिरेशन की कैपेसिटी क्या है मेरे लंग की? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज आईआरवी प्लस टीवी, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? What is the expiratory capacity of the lung? Come on, now tell me, what is the expiratory capacity of the lung? Inspiratory capacity तो बता दिया, what is expiratory capacity now? बताओ। Very good आदित्य, very good खुशी, very good निरंजन, very good प्रथमेश। The inspiratory capacity was IRV plus TV, expiratory capacity would be ERV, expiratory reserve volume, और tidal volume में भी तो expiration होता है ना, so expiratory capacity is ERV plus TV. Then what is the vital capacity? Vital capacity का मतलब होता है इन चारों वॉल्यूम्स में से कौन सा हम यूज कर सकते हैं, व्हाट इज यूजेबल फॉर अस? इन चारों वॉल्यूम्स में से व्हाट आर द वॉल्यूम्स विच आर यूजेबल फॉर अस? निरंजन, those who are writing only one, they are incorrect. Devangi was the first person, correct. Prathamesh, correct. Khushi, correct. I cannot use residual volume because it is always there in the lungs. I can't use it during breathing. What I can use during breathing is tidal volume, inspiratory reserve volume, and expiratory reserve volume. So that is the vital capacity of the lungs. Every alternate year, lung volume or capacity के क्वेश्चंस या तो मैच द कॉलम या तो मीनिंग इसके आते हैं नीट में. दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रीदिंग. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. वॉल्यूम हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटी एडिशन होता है ये वॉल्यूम्स का. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब मेरे लंग में इंस्पिरेशन का कितना कैपेसिटी है. तो टाइडल वॉल्यूम में इंस्पिरेशन हो सकता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पिरेशन हो सकता है. वैसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वैसे ही वाइटल. वाइटल मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों. देन वी हैव अ कैपेसिटी कॉल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी. मैं पूछ रहा था ना हमारे लंग का वॉल्यूम कितना है, हमारे टोटल लंग का कैपेसिटी कितना होगा बताओ. टोटल लंग कैपेसिटी के लिए ये चार वॉल्यूम्स में से कौन सा वॉल्यूम हम लोग चूज करेंगे? कम ऑन, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी में ये चारों वॉल्यूम में से हम कौन सा वॉल्यूम चूज करेंगे? कौन कौन से वॉल्यूम्स हम चूज करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी के लिए? Here they are not, here they are not. खुशी,
आपने मुझे एक वॉल्यूम दिया है और एक कैपेसिटी दिया है, मैंने इन चारों वॉल्यूम्स में से कौन सा वॉल्यूम हम यूज कर सकते हैं लंग कैपेसिटी के लिए? यस खुशी, यू करेक्ट। सो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है ये चारों टोटल लंग का कैपेसिटी होगा ना। वाइटल कैपेसिटी मतलब टोटल कैपेसिटी में से मैं यूज इतना ही कर पा रहा हूं, वाइटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी में से मैं इंस्पिरेशन के लिए सिर्फ इतना यूज कर पा रहा हूं। टोटल कैपेसिटी में से मैं एक्सपिरेशन के लिए सिर्फ इतना ही यूज कर पा रहा हूं। ना मेरे को एक बात बताइए, आप सब लोग ने फोर्सफुल ब्रीदिंग किया राइट? मैं आपको बोल रहा था ना, जितना दम दम लगा के ब्रीद आउट करो। सबने फोर्सफुल ब्रीदिंग किया। मुझे एक बात बताइए, ये फोर्सफुल ब्रीदिंग आप अपने लाइफ में ऑफन यूज करते हो या रेयरली यूज करते हो? ऑफन ओ, रेयरली आर। डू यू यूज दिस ऑफन और डू यू यूज दिस रेयरली? वी डोंट यूज एक्सपिरेशन ऑफन। कोई बैठ के ब्रीद आउट नहीं कर रहा होता है। ओनली में अगर कुछ अटक गया नाक में या इसमें, तो वी ट्राई टू ब्रीद आउट forcefully. In fact, it is so rare that we very in few times in our life only we would have forcefully breathed out, unless you are doing Baba Ramdev ka Anulom Vilom and Kapal Bharti. Yeah, that is why there is a concept called functional residual capacity. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है? वो पार्ट जो हम लोग या तो नहीं यूज करते या रेयरली यूज करते हैं। सो जो नहीं यूज करते वो तो रेजिडुअल वॉल्यूम है, और जो रेयरली यूज करते वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनली मतलब जब हमारा लंग्स नॉर्मली फंक्शनल कर रहा होता है, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारे लंग में ही रहता है, बहुत रेयरली ये बाहर आता है, राइट? So that is why very important, functional residual capacity. Please make a note of all this. Tidal volume 500, inspiratory reserve volume 3 liters, expiratory reserve volume 1.1 liter, and residual volume 1.2 liters. Residual volume is always more than expiratory reserve volume. So sometimes they ask you, arrange the following volumes in the order of their quantity. So सबसे कम टाइडल वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कैपेसिटीज आर अ कॉम्बिनेशन। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अगर मैं ऐड करूं IRV प्लस TV, मैं नहीं चाहता कि आप ये नंबर्स याद रखो, आप ये याद रखो और ये 4 नंबर्स याद रखो, एग्जाम में ज्वाइन कर लेना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 3000 प्लस 500, सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज 3500. Expiratory capacity will be 1100 plus 500, that is 1600, 1600. Vital capacity will be these three combined together, 1600 plus 3000, 4600. And total lung capacity will be 4600 plus 1200, that is 5800. That's around 6 liters. Lung ka capacity is around 5.8 to 6 liters. Okay, so let's try to analyze this with the help of some graphs so that we can understand it better. अभी जो मैंने आपको सिखाया वो ये सारे ग्राफ्स थे, राइट? तो अब इसके बीच में कुछ लाइंस आएंगी, आप मुझे बताएंगे वो कौन कौन सी लाइंस है, राइट? रेडी? गो टू द बी रेडी विथ योर कीबोर्ड। चलो, नंबर 1, ये वाला लाइन जो मैंने बनाया वो क्या है बताइए फटाफट। आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हो। वेरी गुड निरंजन। कम ऑन, ये क्या लिखा है? ये एरो क्या बनाया मैंने? सिर्फ निरंजन को समझ में आया ये एरो क्या है? जो वो रेड एरो कौन सा वॉल्यूम है?
Very good, Ananya, Rashmi, Devangi, Aditya. Wrong terminology. Volume is different and capacity is different. Volumes are independent. Capacities are a combination of volumes. So please correct, Aditya. What should be the correct answer? Shravani, correct. Shreya, correct. Tidal volume, that's absolutely correct. So this is tidal volume, 5 0.5 liters, 500 ml. चलो, what is this now? अब जो ये वाला आया है, what is this? Very good, Niranjan. No, Shreya. It is Shravani incorrect. Josna incorrect. ये जो लाइन बनाया लाइन है ना, ये जो रेड लाइन बना है वो क्या है? वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. अभी जो तीसरी लाइन बनाई है वो क्या है? कम ऑन, जो तीसरी लाइन बनाई है वो क्या है बताइए? देवांगी, प्रथमेश, रश्मि, आदित्य, श्रेया, Shravani, all of you are absolutely correct. It is expiratory reserve volume or ERV. चलो, ये जो फोर्थ लाइन बना है वो क्या है बताइए? Yes, this is residual volume, RV. रेजिडुअल वॉल्यूम, RV. सब लोग सही है, वेरी गुड. ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट को 0 लेता हूं तो ये वाला पॉइंट होगा 1.2 लीटर्स. अब ERV इज 1.1, सो 1.2 प्लस 1.1 कितना हो गया? 2.3. सो ये वाला लाइन वुड बी 2.3 लीटर्स. समझा? अब टाइडल वॉल्यूम इज व्हाट? टाइडल वॉल्यूम इज 0.5. So this is 0.3 plus 2.3 plus 0.5, 2.8 liters. Then IRV is 3. So this one will be what? This one will be 5.8 liters. Did you understand how this graphical representation is going on? 0 to 1.2 is residual volume. 1.2 to 2.3 मतलब 1.1 is ERV, 0.5 is TV and 3 liters is IRV. So this was all about volumes. Now let's talk about capacities. Chalo, what is this green line that I have drawn? Batao, the green line that I have drawn, what is it? Good Niranjan, good Devangi. जोसना TC करके कुछ नहीं होता. प्रथमेश करेक्ट. अनन्या TRC करके कुछ नहीं होता है. श्रेया करेक्ट. What is this? This is TLC, total lung capacity. Total lung capacity. So whenever I have a combination, it is going to be capacity. When I have individual 4, they are volumes. चलिए बताइए ये क्या है? अभी ये वाली green line क्या है? The new green line that we are seeing. What is this new green line? Come on quickly. ये new green line में, ये new green line में एक वॉल्यूम नहीं है और वो एक वॉल्यूम
हम लोग यूज भी नहीं कर सकते। नहीं निरंजन, इनकरेक्ट। उसका बहुत स्पेसिफिक नाम क्या है? उसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। ओके, चलो ये बताओ क्या है नाउ। द थर्ड ग्रीन लाइन, व्हाट इज दिस? व्हाट इज द थर्ड ग्रीन लाइन? देवांगी इनकरेक्ट। प्रथमेश, अनन्या, रश्मि, निरंजन करेक्ट। दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। चलो, व्हाट इज दिस ग्रीन लाइन नाउ, द फोर्थ वन? What is the fourth one? It's a combination of expiratory reserve volume and residual volume. It's a combination of expiratory reserve volume and residual volume. Again, Niranjan, it is incorrect. Very good, Ananya. Very good, Rashmi. It is a residual capacity because lung के अंदर रहता ही है, unused है ना. Residual capacity. हम लोग ने एक वर्ड कॉइन किया था, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. नॉर्मली हमारे फंक्शनिंग में ये नहीं यूज होता. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. नाउ सपोज अ पर्सन ऑन ब्रीदिंग. मैं अपने ग्राफ में इधर पहुंचा हूं. मैं अपने ग्राफ में ये पॉइंट में पहुंचा हूं. ये पॉइंट में पहुंचा हूं. तो इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट में पहुंचा हूं, इसका मतलब क्या है? मैंने कौन सा ब्रीदिंग, कौन सा प्रोसेस किया है? नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन. क्या किया है मैंने? नॉर्मल एक्सपिरेशन या फोर्स एक्सपिरेशन? यस, majority of y'all are absolutely correct. This line, this dotted line represents normal inspiration and this dotted line represents normal expiration. This line represents, है ना, forced inspiration and this line represents forced expiration. Now listen to this. If a person exhales out forcefully by applying all his efforts, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, and you have to tell me the answer. If a person exhales out forcefully by applying all his efforts, यहां से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन. What will be the pulmonary volume inhaled by him immediately under normal condition without applying extra effort? ठीक है, ये क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम्स के बारे में बताओ. 4 वॉल्यूम है ना, उसमें से 1 या 2 का कॉम्बिनेशन या 3 का कॉम्बिनेशन या 4 का कॉम्बिनेशन, मुझे वो बताओ. मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब मुझे ऐड करके मत बताओ आंसर. ओके, वेरी गुड देवांगी, वेरी गुड खुशी. अब बहुत सारे लोगों को तो ये क्वेश्चन शायद समझा भी नहीं होगा, दोबारा से समझा देता हूं. वेरी गुड देवेंद्र, दीपेंद्र, गुड आंसर. ऑल राइट,
तो जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझा, I'll just clear the board for just 1 second. Okay. Now I am writing four positions here. Let me teach you how to do this. Okay. So I'm going to write four positions. Yes. This is position number 1. This is position number 1. This is position number 2. This will be position number 3. And this is going to be position number this is going to be position number 4. ठीक है. Now let's read the question, kids. I want, जिन लोगों को सही आंसर मैंने तुम्हारा नाम लिया है, श्रेया, निरंजन, आप लोग सही हो. सॉरी, श्रेया गलत है, निरंजन सही हो आप. जिन लोगों को मैंने नाम लेके सही बोला है वो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे. जिन लोगों को नहीं आया है या गलत हुआ है वो अटेम्प्ट करेंगे. अब लेट्स रीड दिस. इफ अ पर्सन एक्सेल्स आउट फोर्सफुली by applying all his efforts, so tell me at which position will the person, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कौन से पोजीशन पे उसका ब्रेथ रहेगा. रश्मि और करेक्ट फॉर द अर्लियर आंसर. अभी का आंसर दीजिए. चलिए, स्पेशली दोज हु डिडंट गेट द आंसर. ओके अनन्या, यू आर करेक्ट. प्रथमेश फिर से क्वेश्चन देख, क्या लिखा है. एक्सेल्स आउट फोर्सफुली ना, फोर्सफुली ब्रीद आउट किया है. अमन फिर से क्वेश्चन देख. एक्सेल्स आउट, ऊपर इनहेल है, नीचे एक्सेल है, राइट. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. मतलब ये पर्सन यहां पे पोजीशन पॉइंट नंबर 3 पे है. इफ अ पर्सन एक्सेल्स आउट फोर्सफुली, है ना, फोर्सफुल एक्सेलेशन है, फोर्सफुल. अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन. इनहेल्ड बाय हिम अंडर नॉर्मल कंडीशन विदाउट अप्लाइंग एक्स्ट्रा एफर्ट. मतलब ये नॉर्मल इंस्पिरेशन बात कर रहा है कि फोर्स्ड इंस्पिरेशन बात कर रहा है. अब मेरे को बताओ, पोजीशन 1 में जाएगा या पोजीशन 4 में जाएगा. पोजीशन 1 में जाएगा या पोजीशन 4 में जाएगा. 1 में, करेक्ट, बिकॉज वो राइट. सो ये दोनों को 1 2 3 4 में अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. So if a person forcefully exhales by applying all his efforts, what will be the pulmonary volume inhaled by him. मतलब उसको यहां से निकल के अभी यहां पहुंचना है, बराबर. ये पॉइंट पोजीशन नंबर 1 है, राइट. मतलब कितना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम. तो ये दोनों क्या इंक्लूड करते हैं, यहां से लेके यहां तक ईआरवी, है ना, ईआरवी, और यहां से यहां तक टीवी. सो इसके 4 ऑप्शंस में देने वाला था, बिना दिए ही आप लोगों को आ गया. So the answer is TV and ERV. Did we understand? समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा? सबको समझा? वाह, सबको समझा. देखते कितना समझा. Are we ready for more questions like this? Yeah? If you are ready, just type R so that I know you are ready, so that we can quickly start. So next question, very good.
What will be the volume in lungs? What will be the volume in lungs, or what will be the volume of air in lungs after forceful inspiration? आपको मुझे आंसर एक्चुअल वैल्यूज में नहीं देना है, आपको मुझे वॉल्यूम्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन में देना है. बताओ, चलो बताइए फटाफट. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन? What will be the volume of air in the lungs? Devangi, you are the first person to answer it correctly. Niranjan, you are correct as well. So इसका आंसर है, क्या बोल रहा है? फोर्सफुल इंस्पिरेशन. मतलब आई एम एट पोजीशन नंबर, आई एम एट दिस पोजीशन, आई एम एट दिस पोजीशन, और वो मुझे लंग का ये बोल रहा है, तो दिस वाज जीरो ऑफ द लंग्स, राइट? तो इसका मतलब वो मुझे क्या पूछ रहा है, यहां पे पहुंचा तो लंग में कितना हवा रहेगा? पूरा ये तो लंग में हवा रहेगा ना. So lung में what will be the volume of air in the lungs after forceful inspiration? नीचे से शुरू करना है. Residual volume, expiratory reserve volume, inspiratory reserve tidal volume and inspiratory reserve volume. मतलब total lung capacity के बारे में मैं पूछ रहा था. What is the volume of air in the lungs after forceful inspiration? ठीक है. चलो, same question. What will be the volume of air in the lungs? Same question. लास्ट दो वर्ड चेंज कर रहा हूं. आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, what will be the volume of air remaining in the lung after forceful expiration? Yes, now everybody started to get the hang of it. All of y'all are absolutely correct. After forceful expiration का मतलब क्या है? मैं यहां पे हूं तो लंग में कितना बचा, एयर कितना बचा? इतना ही. सो दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम. Are we ready for question number 3 now? So question number 3, here it goes. How much air, how much air can be maximally, how much air can be maximally thrown out of the lungs? How much air can be maximally thrown out of the lungs after efforted inhalation? बताओ. Very good, Dipendra. You're the first one to answer it correctly. Aditya, correct. Devangi, correct.
Niranjan incorrect. Shreya correct. Prathamesh correct. Rashmi, think again. How much air can be maximally thrown out of the lungs after efforted inhalation? Efforted inhalation मतलब क्या? खुशी incorrect. Aditya correct. Ananya correct. Yes, forced inhalation, forced inspiration. ज्योत्सना करेक्ट, खुशी करेक्ट. तो अभी क्या बोल रहे हैं? अब मैं यहां पे हूं, राइट? आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन मतलब मैं यहां पे हूं और मेरे को क्या पूछ रहा है? कितना हवा मैं मैक्सिमली लंग के बाहर छोड़ सकता हूं ना. लंग के बाहर मैं सब हवा छोड़ सकता हूं एक्सेप्ट फॉर रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट? मतलब ये हवा बाहर निकल सकती है, ये भी हवा बाहर निकल सकती है और ये भी हवा बाहर निकल सकती है, पर उससे ज्यादा हवा बाहर नहीं निकल सकती है. तो ये क्या है? IRV, टीवी और ERV मतलब वाइटल कैपेसिटी. आप लोग सबको समझा? तो बेसिकली जब ये लोग एयर वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस बनाते हैं तो याद रखना, दे ऑलवेज विल गिव यू सम आइडिया वेयर इन द ग्राफ इट लाइज. करेक्ट? If you enjoyed this practice exercises, just type enjoy EN so that I know you have enjoyed. All right. So as we were discussing, oxygen from air reaches the respiratory organ, हमने ये किया हुआ है, right? Breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration. So exchange of gases दो जगह पे होता है, external respiration, internal respiration. So exchange of gases is our next step. But before we take up external respiration, let's understand certain uh, the airflow dynamics. Okay, airflow dynamics मतलब कितना हवा आ रहा है. So we have a concept called pulmonary ventilation. What is the meaning of the word ventilation? Pulmonary ventilation. Ventilation का मतलब होता है, absolutely correct, flow of air. सही लिखा आपने. Flow of air is pulmonary ventilation. Now whenever we use ventilation with respect to lungs, it's actually a rate of flow of air. So what is pulmonary ventilation? Volume of air that enters the lung, volume of air that enters the lungs per minute. तो एक मिनट में कितना हवा अंदर जाता है? कैन यू टेल मी, एक ब्रेथ में कितना हवा अंदर जाता है? एक ब्रेथ, अगर किसी ने एक ब्रेथ लिया तो कितना हवा अंदर जाएगा? वेरी गुड निरंजन. अगर किसी ने एक ब्रेथ लिया तो कितना हवा अंदर जाएगा? वेरी गुड देवांगी. नहीं प्रथमेश, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml ना, नॉट 250. 500 ml अंदर जाएगा, 500 ml बाहर आएगा, 500 ml अंदर जाएगा, 500 ml बाहर आएगा. So the volume of air that enters the lung in one breath, can I call it as tidal volume? Tidal volume. And I will multiply that with number of times a person breathes in a minute.
So number of times the person breathes in a minute, that would be breath rate. So tidal volume is what? 500 ml, and breath rate is 12 to 16 per minute. Let's take the, yes. So we'll take 12 breaths per minute. So that comes to around 12 5 is 60. 6,000 ml per minute. That's the pulmonary ventilation. मतलब 1 मिनट में कितना एयर एक्सचेंज होता है लंग्स में? 6 लीटर. Now with pulmonary ventilation, children, we have one more ventilation, that is called alveolar ventilation. So if pulmonary ventilation is amount of air that, or volume of air that enters the lungs per minute, what will alveolar ventilation be? Volume of air, volume of air that reaches alveoli, volume of air that reaches alveoli per minute will be alveolar ventilation. Now tell me how much air does enter the alveoli in one breath? जो 500 ml हवा लंग में जाती है, क्या वो 500 ml के 500 ml पूरा एल्वियोलस में यूटिलाइज, एल्वियोलस तक पहुंचता है क्या? पहुंचता है? सपोज एक लॉन्ग ट्यूब है और उस लॉन्ग ट्यूब पे एक बलून अटैच्ड है और मैं इधर से हवा ब्लो कर रहा हूं, ठीक है? तो जब मैं हवा बाहर कैलकुलेट करूंगा तो ये हवा, ये इसकी हवा, ये ट्यूब की हवा भी होगी और बलून की हवा भी. यस और नो? सो इसका मतलब क्या है? दैट द बलून will not receive the entire air. So air or volume of the tubes, मतलब air present in the tubes will not reach the alveoli. Do you remember a concept like this which I taught you when I was doing uh, the parts of respiration? Do you remember that? It's called anatomical. हाँ, no लिखो बस, और तो कुछ आता नहीं है, no ही लिखना है. It is called anatomical dead space. Anatomical dead space is the volume of air present in the tubes. They don't reach the alveoli. ठीक है? So alveolar ventilation is going to be tidal volume. Tidal volume minus the amount of air present in the tubes which do not reach the alveoli. उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस. डेड स्पेस बिकॉज वो हवा हमारे लिए कोई यूज की नहीं है. एनाटॉमिकल डेड स्पेस. सो इतना हवा एल्वियोलस तक पहुंचेगा एंड दैट वी मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ रेट. ब्रेथ रेट. So what is alveolar ventilation going to be? 500 ml minus alveolar dead space was 150 ml. Correct? And then if I take this, multiply by 12 per minute. Come on, calculate and tell me what was the alveolar ventilation.
Come on, tell me what is alveolar ventilation? Give me the value of alveolar ventilation. Give me the value of alveolar ventilation now. Come on. Very good, Aditya. Very good. Himansh, very good. 500 minus 150 is 350. 350 into 12. Karo. Shreya, correct. Absolutely. Devangi, check again. बाकी सब वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आंसर बता ही देगा. कौन इतना मेहनत करेगा, है ना. 4200 ml per minute. खुशी, how can it be a number greater than 6000? तो alveolar ventilation और pulmonary ventilation में फर्क दिख रहा है. alveolar ventilation, pulmonary ventilation मतलब 1 मिनट में 6 लीटर एयर जाता है, पर उस 6 लीटर में से alveolus तक सिर्फ 4200 4.2 लीटर जाता है, बाकी एक्सचेंज भी नहीं होता. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन देम. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन देम. Right? So today, please ensure that you are reading NCRT, the tidal volumes, the inspiratory reserve volume, all the volumes. आज के आज पढ़ लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. Also, tomorrow our class, I think टाइम टेबल में तुमको 4 o'clock से लिखा है. Tomorrow bio class will be from 3 to 5 p.m. 3 to 5 p.m. bio class. ओके. जो इवनिंग क्लास है वो तुम्हारा आई थिंक 4 to 6 लिखा है. देयर हैज बीन अ चेंज देयर, इट इज 3 to 5 p.m. ऑल राइट. या जस्ट अ रिमाइंडर, आई थिंक कुछ लोगों को कंफ्यूजन था खुशी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट announcing it. Okay. All right. Thank you very much, kids. If you have any queries, you can please ask me. If not, happy studying. Please ensure that you are studying well, doing well. We are still compiling the Aqua World list. As soon as it is done, I will put it on the group. All right, kids. Bye bye. Thank you very much then. Take care.